होते हैं अल्कीन में, इसको जस्ट 1 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूं, इसके बाद हम क्लास। ओके, वी नो वेरी वेल दैट in alkene, the double bond of an alkene is an area of high electron density. You see, this is the alkene, right? This alkene is highly electron density, having high electron density area, because the first bond is carbon-carbon sigma bond, and the second bond is pi bond, right? The double bond of an alkene is an area of high electron density, and therefore an area of highly negative charges, right? So the negative charge of the double bond due to reach of electron may be attacked by electron deficient species, which will accept a lone pair of electron from these alkenes, right? These species have either full positive charges or slightly positive charges on one or more of the atoms. They are called electrophiles, that meaning the electron loving or electron attracting groups, right? So electrophiles are basically electron deficient species. If you on the basis of the structure of alkene, which is electron rich, there are possibilities that alkene undergo addition reactions, right, when attacked by electrophile. This is called electrophilic addition reactions. Suppose you see the mechanism how electrophilic addition reaction possible in alkene. Suppose you see here, this is alkene, and you see there is a compound in which one atom is electron deficient than other atom, right? So in the first stage of electrophilic addition, the positive charges of electrophile, which is represented as A, in atom A, is attracted to the electron density in the double bond, right? As a result, what will happen, and as the electrophile approach the double bond, electrons in the AB bond are repelled towards B. These pi electrons, lone pair from pi electron, attacked on this electrophilic species. As a result, bond break between A and B, right? Since we know that covalent bond have two electrons are covalently bonded through mutually, okay? So now what will happen? The pi bond breaks. As a result, pi bond breaks, and a double bond, a bond to the carbon forming, is called carbocation. When this double bond breaks, both electrons from these carbon, that is lone pair, attack on this electrophilic species, which lead to the formation of carbocation on adjacent carbon, right? What do you mean by carbocation? An ion with a positively charged carbon atom is called carbocation or carbonium ion. Sometimes we can say that carbonium ion, but most frequently we are using this terminology as carbocation. The two electrons in the AB bond moves to B. So when this lone pair of electron from this olefin attack on electrophile, the bond, both electrons between these bonds move to B, which lead to the formation of anion. इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, जिसको हम anion कहते हैं. So this is the first step. In second step of addition reaction in alkene, in the second stage of electrophilic addition, the B ion, which is anion, right? B ion act as nucleophile, which act as nucleophile and attacks the carbocation, right? It attacks on the carbocation, lead to the formation of what will happen when this nucleophile attack on carbocation. There is covalent bond form, but the lone pair of electrons on B atom B, इसके ऊपर lone pair है, are attracted towards positive charges, charged carbon in the carbocation, causing B to bond on it. इसके जरिए bond बनेगा. But remember,
both electrons in the bond they join B and C to the carbocation come from B. इसके जरिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बोकेटाइन के लिए जो आ गए हैं वो B से आ गए हैं, ठीक है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड को जो लोन पेयर एक ही एटम शेयर करें इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट। Suppose इसकी we will try to explain how electrophilic hydrogenation takes place. A practical example हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। Hydrogenation means addition of hydrogen. Hydrogen can be added to the carbon-carbon double bond using a nickel catalyst in a process is called hydrogenation. Normally we can use a platinum also as a catalyst, but you see an example oil से डाल्डा बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स आर, वी नो वेरी वेल, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, दैट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट, and may be hydrogenated to make a margarine which has a higher melting point. Basically पहले वो लिक्विड था, इससे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, डाल्डा या घी बनाना, तो इसको हम रिडक्शन के जरिए हम ये कर सकते हैं। हाउ व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सो व्हाट विल हैपन, डाल्डा बनाने का जो प्रोसेस है इसमें, एज वेल एज इन दिस रिएक्शन nickel catalyst is used. This require a high temperature, that is 200 degrees centigrade, and a pressure of 1000 kPa, right, kilopascal. So 200 degrees centigrade temperature चाहिए. So after complete hydrogenation डाल्डा फॉर्म या घी बनता है। घी बनने के बाद फिर इस कैटलिस्ट को रिकवर करते हैं। अगर ये कैटलिस्ट रिकवर नहीं करेंगे तो ये पॉइजनस होगा, ठीक है। डाल्डा बनने के बाद या घी बनने के बाद इस निकल को हमें रिकवर करना होता है, इसी वजह से डाल्डा जो है थोड़ा सा महंगा होता है तेल की निस्बत, तो ये निकल को दोबारा रिकवर करना लाजिम है, ठीक है। बिकॉज निकल यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन इन वेजिटेबल ऑयल्स, vegetable oils are unsaturated. To make them saturated, हमें निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे और हाइड्रोजनेशन के जरिए हम ये बनाएंगे, ठीक है। अगर ये अल्कीन है या नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो ब्रोमीन ऐड होता है और क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर in which red or orange color solution of bromine. A few drops of bromine water are added to the test liquid and shaken. If a carbon-carbon double bond is present, the bromine adds across it and the solution turns colorless. ठीक है, ब्रोमीन इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको शेक करेंगे, तो अगर ये कलरलेस होगा तो इसका मतलब है हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। दिस इज ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश either alkenes are present or not, right? You just add bromine water, right? इसका इक्वेशन क्या है, when क्या होता है, what actually happen when bromine water added, तो ये कलरलेस बनता है। तो ये इक्वेशन है when ethene react with bromine water, as a result 2 bromine atoms are added, ठीक है, 2 bromine atoms इसमें ऐड हो जाते हैं और वाटर जो है एलिमिनेट होता है, ठीक है। However, because water is present in such a large amount, a water molecule adds to one of the carbon atom followed the loss of hydrogen ion, ठीक है। So this is a simple test to distinguish either alkene or alkane or alkyne present. तो अल्कीन है या नहीं है इसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं हम, और इसके जरिए हमें पता चलता है जब हम इसमें ऐड करते हैं और इसको शेक करते हैं तो ये कलरलेस बन जाएगा, तो इसका मतलब है देयर इज ब्रोमीन प्रेजेंट इन आवर कंपाउंड। सो दिस इज ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आइदर ब्रोमीन इज प्रेजेंट और नॉट, राइट? ओके, एनी क्वेश्चन? Any question? No, sir. No, sir. No, sir.